गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमसीक्यूज करेंगे और ये एमसीक्यूज हमारा होगा द कैनोनाइजेशन पे, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। बहुत बेहतरीन पोएम है। तो आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। और इसमें वीडियो में हम लोग इस सेशन में हम लोग जो है बायोग्राफी भी देखेंगे जॉन डन की, और मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं, जो पोएट्री है, उस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ नॉट मेटाफिजिकल पोएट। इसमें से आपका मेटाफिजिकल पोएट कौन नहीं है। तो इसमें आपका देखिए जॉन डन भी हैं, जॉर्ज हर्बर्ट भी हैं, मार्वेल भी हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन आपका मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द कैनोनाइजेशन इज अ पोएम रिटन इन विच लिटरेरी पीरियड। एलिजाबेथन, जैकोबियन, विक्टोरियन एंड रोमांटिक एज। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैकोबियन पीरियड। क्वेश्चन नंबर थ्री, द कैनोनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, क्लासिकल पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द कैनोनाइजेशन। सेंट्रल थीम क्या है? पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, द प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ लव, सी डेथ एंड डिके, एंड डी नेचर एंड ब्यूटी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो सेंट्रल थीम आपका है वो है आपका द प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर फाइव, द कैनोनाइजेशन द पोएट कंपेयर्स लवर्स टू। कैनोनाइजेशन में जो पोएट है वो लवर्स को किससे कंपेयर करता है? बर्ड्स, सेंट्स, किंग्स, गॉड्स। तो इसमें आपका जो है सेंट्स से आपका कंपैरिजन किया जाता है, सेंट्स से। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है, व्हाट डज द वर्ड कैनोनाइजेशन लिटरली मीन। ए, डिक्लेयरिंग समवन अ क्रिमिनल, बी, डिक्लेयरिंग समवन ए सेंट, बी, सी, डिक्लेयरिंग समवन अ सिनर, एंड डी, डिक्लेयरिंग समवन डेड। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्लेयरिंग समवन ए सेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द पोएम। His beloved, a friend or critic who mocks his love, God and the reader। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ फ्रेंड और क्रिटिक हु मॉक हिज लव्स। क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मेनी स्टेंजा डज द कैनोनाइजेशन कंटेन। 3, 4, 5, 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 स्टेंजा आपकी इसमें है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा। ए बी बी ए बी बी ए सी 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 ए बी सी सी डी डी डी, ए बी बी ए सी सी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है आपकी ईच स्टेंजा की, तो वो आपकी है ऑप्शन नंबर बी, ए बी बी ए सी 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 ए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टोन डज डन adopt in the canonization। A, angry, B, ironical and witty, C, melancholic, and D, fearful। तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आयरोनिकल एंड विटी। क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम बिगिंस विथ विच फेमस लाइन। बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन, B, for God's sake hold your tongue and let me love, C, go and catch a falling star, and D, death be not proud though some have called thee।
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। What does the poet ask the listener to do in the first stanza? A. To praise his poetry. B. To stop criticizing his love. C. To pray for him. And D. To write about him. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हिज लव। What does Donne mean by what merchant's ship have my sight drowned? His sign are powerful like storm. B. His sign cause a real shipwreck. And C. He is jealous of sailors. And D. He lost his wealth at sea. Correct answer will be option number A. His shy are powerful like storms. Question number 14. What is the phonics riddle mentioned in the poem? Lovers dying and rebirth together like the phoenix. A myth about a golden bird. A puzzle about eternal life. D. A reference to the poet's death. Correct answer is option number A. Lovers dying and reborn together like the phoenix. Question number 15. What does Donne mean by we die and rise the same? A. Lovers experience a kind of spiritual rebirth through love. B. Love leads to death. C. Lovers reincarnate literally. And D. Lovers go to heaven. करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवर्स एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रीबर्थ थ्रू लव। क्वेश्चन नंबर 16. Donne compares his and his lover's love to a building, a hermitage and cloister, C. a garden, D. a battlefield. Correct answer is option number B, a hermitage and a cloister. Question number 17. What does the poet mean by we will build in sonnets pretty rooms? They will live in poems as saints of love. They will build real rooms. They will live in heaven. They will live secretly. Correct answer will be option number A. They will live in poems as saints of love. What figure of speech dominates the poem? Simile, conceit, alliteration, metaphor. Correct answer will be option number B, conceit. Question number 19. What is a metaphysical conceit? A. A simple metaphor. B. An elaborate and far-fetched comparison. C. A direct statement. And D. A rhyme pattern. Correct answer will be option number B, far-fetched comparison. Question number 20. What do the lovers seek through canonization? A. Worldly fame. Spiritual immortality through love. C. Political power. And D. Material wealth. Option number B is correct. Spiritual immortality through love. Donne's attitude towards love in the canonization is cynical and mocking, spiritual and idealistic, physical and sensual, religious and submissive. Correct answer is option number B, spiritual and idealistic. Question number 22. Which quality of metaphysical poetry is most evident in the canonization? Simplicity of diction, use of nature imagery, use of wit and paradox, D. Melancholy tone. Correct answer will be option number C, use of wit and paradox. Question number 23. Which of the following best defines canonization of love in the poem? A. Making love divine and sacred. B. Making love a sin. C. Rejecting love. And D.
punishing lovers. Correct answer is option number A, making love divine and sacred. Question number 24. What is the final message of the poem? A. True love, transcendent death and worldly judgment. B. Love brings pain. C. Love should be avoided. And D. Love is only physical. Option number A is correct. Love, true love, transcendent death and the worldly judgment. Next and last question. Which literary features is not typical of the canonization? A. Logical agreement. B. Spiritual imagery. C. Simple romantic emotion. And D. Complex conceit. Correct answer will be option number C, सिंपल रोमांटिक इमोशन. अब देखिए इसमें कुछ और ये आंसर की है आप सीट है. इसमें आपका और जो है मेटाफिजिकल जो पोएट्री है उससे कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है. इसको हम लोग देख लेते हैं. विच पोएट इज कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स? ए. जॉन मिल्टन. बी. जॉन डन. C. William Wordsworth and D. Alexander Pope. Correct answer will be option number B. B is correct answer, John Donne. Question number 2. A metaphysical conceit is defined as a simple comparison, ordinary metaphor, and extended far-fetched comparison between dissimilar things. तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, far-fetched imagery comparison between dissimilar things. Question number 3. Which critic first used the term metaphysical poetry? Dr. Samuel Johnson, T.S. Eliot, F.R. Lewis, I.A. Richard. तो ये जो टर्म सबसे पहले यूज किया था वो किया था आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने. क्वेश्चन नंबर 4. मेटाफिजिकल पोएट्री फ्लोरिश्ड मेनली ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, डी मॉडर्न एज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज. क्वेश्चन नंबर 5. Which poem by John Donne reflects the theme of spiritual love using a compass conceit? A. The Sun Rising. B. The Canonization. C. A Valediction Forbidding Morning. And D. Holy Sonnet. Correct answer will be option number C, A Valediction. Question number 6. Unified sensibility is a concept used by डॉक्टर जॉनसन, T.S. एलियट, ड्राइडेन, अर्नॉल्ड. तो ये जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है आपका वो किया गया है T.S. एलियट के द्वारा. मेटाफिजिकल पोएट्री इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, इंटेंस फीलिंग विद द इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ओनली रिलीजियस थीम्स एंड डीप पास्टोरल एलिमेंट्स. Metaphysical poetry is mainly characterized by intense feeling with intellectual argument. Question number 8. Which of the following is not metaphysical poet? तो इसमें आपके जो है जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैसो, एडमंड स्पेंसर. तो इसमें आपके जो है एडमंड स्पेंसर साहब नहीं हैं, बाकी ये तीनों हैं. Question number 9. Holy sonnets are written by John Donne, George Herbert, John Dryden, Henry Vaughan. Correct answer will be option number A, John Donne. Question number 10. Which figure of speech is most commonly linked with metaphysical poetry? A. Paradox, A. Hyperbole, B. Paradox, C. Personification and D. Irony. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पैराडॉक्स. अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके जो है जॉन डन के बायोग्राफी से है. तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572, 1564,
1608, 1588. Correct answer will be option number A, 1572. Question number 2. Where was John Donne born? Stratford-upon-Avon, London, Dublin, Cambridge. Correct answer is option number B, London. Question number 3. John Donne belonged to which religion by birth? A. Protestant, B. Catholic, C. Puritan, and D. Jewish. Correct answer is option number B, Catholic. Question number 3. Which university did John Donne attended? A. Oxford and Cambridge, B. Oxford and Lincoln's Inn, C. Cambridge only, and D. Harvard University. Correct answer is option number B, Oxford and Lincoln's Inn. Question number 5. Donne secretly married A. Anne Hathaway, B. Anne Moore, C. Lucy Russell, and D. Elizabeth Boyle. Correct answer is option number B, Anne Moore. Question number 6. Famous line John Donne, Anne Donne is associated with? A. His ordination, his marriage, his poetic depth, and D. His imprisonment. Correct answer is option number B, his marriage. Question number 7. Donne became the Dean of Canterbury Cathedral, St. Paul Cathedral, Westminster Abbey, and Durham Cathedral. Correct answer is option number B, St. Paul's Cathedral. Question number 8. John Donne was associated with which major poetic group? Cavalier group, metaphysical poets, romantic poets, and Georgian poets. Correct answer is option number B, metaphysical poets. Donne's wife Anne Moore died after giving birth to 7 children, 10 children, 12 children, and D. 5 children. Correct answer is option number C, 12 children. Question number 10. John Donne died in 1631, 1667, 1623, and 1600. Correct answer will be option number A, 1631. Question number 11. Donne's most famous prose work is The Temple, Holy Sonnet, Devotion upon Emergent Occasion, and D. Religio Medici. Correct answer is option number C, Devotion upon Emergent Occasions. Question number 12. Who persuaded Donne to take holy orders? A. King James I, Queen Elizabeth I, Charles I, and D. Oliver Cromwell. Correct answer is option number A, King James. Donne's poem The Flea belongs to love poetry, religious poetry, pastoral poetry, epic poetry. तो ये आपका है love poetry. The style of Donne's poetry is often described as ornamented and the decorative, B. intellectual and witty, C. plain and narrative, D. romantic and emotional. Correct answer is option number B, intellectual and witty. Question number 15, and this is the last question of this set. Donne's poetry shows a transitions from A. love to religion, B. religion to nature, C. nature to war, and D. drama to epic. Correct answer is option number A, love to religion. तो ये हम लोग का जो है MCQs फिनिश हुआ, जिसमें हम लोग पोएट से और पोएट्री से और आपका मेटाफिजिकल पोएट्री से कुछ क्वेश्चंस किए। तो इसी के साथ ये हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।